अगर आप एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर एक प्रैक्टिसिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियर, तो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। देखो, जब भी कोई बीम का रिएक्शन, शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट आपको निकालना होता है, आप क्या करते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल यू लुक फॉर द स्टील टेबल। आप स्टील टेबल खोलते हो, फॉर्मूला ढूंढते हो, फिर कैलकुलेटर लेके बैठते हो, राइट? और अगर लोड या स्पान चेंज हो जाए तो फिर वापस से आपको वो सेम प्रोसेस रिपीट करना पड़ता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूं जो ये पूरा प्रोसेस सिर्फ 5 सेकंड में कर देगी। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैंने एक स्पेशल लॉन्च ऑफर रखा है जो सिर्फ पहले 500 स्टूडेंट्स के लिए है। देखो, बीम एनालिसिस ये सिविल इंजीनियरिंग का एक बैकबोन है। देखो, चाहे आप फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बनाना सीखते हो या फिर साइट पे क्विक चेक करना हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लेट्स से गेट, ईएससी या स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो। देखो, 39 स्टैंडर्ड बीम केसेस, सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर, फिक्स्ड, ओवरहैंग, कंटिन्यूअस बीम, ये सारी सपोर्ट कंडीशंस बार बार हमारे डेली कैलकुलेशंस में इस्तेमाल होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हैंडबुक में फॉर्मूला मिलता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन खुद करनी पड़ती है। देखो, एक छोटी सी गलती और पूरा डिजाइन गलत। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना इट्स रियली टाइम कंज्यूमिंग। देखो, और अगर आपको टीचिंग या कंटेंट बनाना है स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए, तो ये सब मैन्युअली प्रेजेंट करना और भी मुश्किल है। तो इसीलिए मैंने बनाया है बीम फॉर्मूला डिजाइन टूलकिट। देखो, एक कंप्लीट एक्सेल बेस्ड वर्कबुक जिसमें IS 800 डिजाइन मैनुअल के सारे 39 बीम लोड केसेस कवर किए गए हैं। नाउ लेट्स लुक एट द शीट। हर शीट में आपको क्या मिलता है? देखो, येलो आर द इनपुट सेल्स, स्पान, लोड, डिस्टेंस डालो, रिएक्शंस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाते हैं। बीम लोडिंग डायग्राम यूजुअली दिखता है, लोड कैसे लग रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं। जैसे ही आप इनपुट चेंज करते हो, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू दैट। So let's take a look of this live example from the Excel. So let's understand first what are the cases that I have included in this manual workbook. Obviously, this is the reference from the IS 800's manual workbook, right? Now the common scenario that we usually get in our day-to-day life calculation will be simply supported with UDL, UVL, partial UDL, right, and overhang beam. So all these cases, all these important cases I have considered with respect to all the reference equations through which we need to calculate the shear force, bending moment and the maximum deflection. So all these different categories of 39 cases I have covered in my calculation of this workbook. I have summarized entire calculation category of this cases over here, total 39 segments, right? And based on that reference calculation, I have updated this toolkit. Now, for each case, I have linked up each segment with respect to all the cases over here. Individual cases you can find it over here. But let's say if you want to directly go to the sheet, let's say you want to go with the simple beam with 2 equal concentrated loads, so I'll click here and directly you will get to that respective case. Case 9 is what? Here it is specified simple beam with 2 equal load symmetric. Here the representation of the condition is given, and with respect to that condition you have to provide the manual input over here, okay? And distance specification E and I value I have manually fetched, so it is self-explanatory. Once you click on the values, it will pop up what you need to enter or what you need to change, and based on that the remaining reactions will be calculated. Okay, here what I have did is based on the shear. See, from the span specification you can directly calculate your shear and moment values as well. I'll just expand this. So based on the span, whatever the values that I am getting for the shear force, it will be populated over here. Similarly for the bending moment as well, the values are linked up and it will represent over here in the form of bending moment diagram. Here the maximum bending moment and deflection will be calculated based on the governing
equation. Whatever the equations that we have followed for different category of condition, they are summarized over here. Similarly, all the different cases, let's say for this case, whatever the span, currently we have span, let's say 6 meter, I'll change it to 5 meter, or let's say 5000 mm, right? So ultimately, based on that, the shear force and bending moment diagram will automatically updated based on the values that we have calculated. So that is the most advantageous thing over here. Each cases I have compare over there, and yes, in some cases the deflection equations are not there, but see, based on the handbook input that I have specified all the calculations, but in some cases deflection equations are not included in the source of reference because the loading produces is piecewise in some cases, right? Let's say for bending moment functions, so determination of beam deflection requires separate integration of each moment segment, application of continuity conditions, and solution of multiple integration constants. So as a result, only reaction shear force and bending moment equations are presented in few cases. That cases also I have summarized in the index. Wherever the deflection case is not applicable, I have specified that with a classic reason. Now let me show you the continuous beam segment as well. So I'll go to the first case index and I'll show you for the continuous beam as well. So here is the cases of continuous beam as well, and for this case as well, all the calculations are made. You just need to enter the values for your loading span and you will get all the required results. So all such 29 cases we have included over here. I hope this will help you out in your day-to-day calculation. So you have seen this. See, पहले ये काम करने में 10 से 15 मिनट लगते थे. Calculator, formula book, graph paper, and now it's take only 5 seconds. और जो सबसे कॉम्प्लेक्स केसेस हैं, जैसे 3 स्पान कंटिन्यूअस बीम और 4 स्पान कंटिन्यूअस बीम, उनके लिए भी मैंने कोएफिशिएंट बेस्ड सॉल्व टेबल्स बनाए हैं जो सोर्स रेफरेंस के एग्जैक्ट डायग्राम वैल्यूज को फॉलो करते हैं. कोई अजम्पशन नहीं, कोई गैसवर्क नहीं. सो ये टूल किट किसके लिए यूजफुल है? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के लिए, असाइनमेंट, सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स और गेट, ईएससी जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिविजन्स के लिए ये एक रेडी रेफरेंस है आपके लिए. प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स के लिए, साइट पे या डिजाइन ऑफिस में क्विक चेक्स के लिए बिना बार बार आईएस कोड पलटने के. देखो, एजुकेटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, अगर आप खुद टीचिंग कंटेंट बनाते हो तो ये रेडीमेड रेफरेंस टूल आपका टाइम बचाएगा. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर फॉर्मूला हैंडबुक से डायरेक्टली वेरीफाई किया गया है. मैंने खुद मैन्युअली क्रॉस चेक किया है ईच रिएक्शंस, शेयर और मोमेंट वैल्यूज, ताकि एक्यूरेसी 100% रहे. मैं खुद सिविल निर्माण चैनल पे पिछले काफी टाइम से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कंटेंट बना रहा हूँ. देखो, IS 800 के डक्टाइल डिटेलिंग से लेके प्रैक्टिकल डिजाइन टूल्स तक, ये टूल उस कमिटमेंट का नेक्स्ट स्टेप है इंजीनियरिंग को सिंपल, एक्यूरेट और एक्सेसिबल बनाने का. सो अब बात करते हैं प्राइस की. नॉर्मली ऐसा प्रोफेशनल एक्सेल टूल किट जिसमें काफ़ी सारे ऑलमोस्ट 39 केसेस, ऑटो चार्ट्स और वेरीफाइड फॉर्मूला हो, मार्केट में काफ़ी महंगा मिलता है. लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि पहले 500 स्टूडेंट्स के लिए ये रहेगा सिर्फ 99 में. हाँ, सिर्फ 99 रुपीज़ में. सो ये प्राइस सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ही. जैसे ही 500 कॉपीज सेल हो जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगा. देखो, तो अगर आप सीरियस हो अपनी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए, तो अभी लिंक पे क्लिक करो डिस्क्रिप्शन में और अपनी कॉपी को सिक्योर करो. देखो, इंजीनियरिंग में एक्यूरेसी और स्पीड दोनों चाहिए होती हैं. सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के ऐसे ही प्रैक्टिकल टूल्स और कंटेंट के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में. धन्यवाद. एंड रिमेंबर, डोंट जस्ट लर्न सॉफ्टवेयर, लर्न कॉन्सेप्ट्स. थैंक यू.